Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good ma'am. morning. Beautiful day. And we have Good Raman's birthday morning. today. Very good Good morning. So, morning. Raman, wish you a very, very happy birthday from all of us. Good Thank morning, you. beta. I hope this year becomes the best for you. Thank you so much. It means a lot. सुबह सुबह आपकी blessings मिल गई. Got everything. अरे अब देखना ये वाला साल तुम्हारा कैसा जाएगा until the next year. It's a transformative year. Thank you from the bottom of my heart. अब तो माइंडसेट चेंज हो गया ना रमन, तो फिर अपने आप जिंदगी तो बहुत खूबसूरत होने वाली है ना. Definitely. ओके तो थोड़ा थोड़ा सुबह मुझे ज्वाइन करने में आज लेट हो गया. माय सिस्टर एंड माय नीस आर हियर फ्रॉम कनाडा, सो सब कुछ द जेट लैग मीन्स कि इस घर में रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी दिवाली हो रही होती है बिकॉज वहां पे दोपहर होती है. So it's like that. So everything got delayed. And good morning, good afternoon to everyone on the YouTube. And thank you so much for being consistent listeners. We get to know that y'all are consistently logged in from different parts of the world. Oh my, this thing has gone somewhere. Screen दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, I resume share. Okay, yeah. Okay, so today the day is day 22. The date is day 22, and the chapter's name is Before Your Very Eyes. So this is the last chapter we are doing about realizing our dreams. And अपने सपने हम पूरे कर रहे हैं, तो आज के बाद से हमको डायरेक्शन मिलेगा कि अपनी जो हमने ड्रीम लिस्ट बनाई है उसको अपने दिल के पास रखें हमेशा, और उसको अगर हो सकता है तो वी कैन राइट इट इन अ हैंड और टेक द पिक्चर ऑफ दैट ऑन आवर गैलरी. जो फोन का कैमरा होता है उससे फोटो खींच लें हम अपनी ड्रीम लिस्ट की, और उसको हमेशा अपने साथ रखें. और जब मन करे उसको निकाल के, या जब फुर्सत हो उसको निकाल के, वी कैन जस्ट रन थ्रू ऊपर से नीचे तक और उसको खूब सारा थैंक यू बोले. मतलब ये जो हमारी ड्रीम लिस्ट होती है, इसको हमको ना सीक्वेंस इसका बाय हार्ट हो जाना चाहिए कि मैंने नंबर 1 पे क्या लिखी थी, मैंने नंबर 2 पे क्या लिखी थी, 3 पे, मतलब इतनी बार हमको उसको देखना चाहिए. मतलब that we actually memorize that what was the sequence of all the 10 dreams. And each time we take it out, there has to be like, just imagine that it is full of that golden shower of dust of gratitude. सो मतलब पूरी वो गोल्डन ही बन गई है ग्रैटिट्यूड के कारण. इतना सारा उसमें थैंक यू कहना है, दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी रियलाइज ऑल माय 10 ड्रीम्स सो इजीली, एंड आई एम रियली लविंग इट, एंड थैंक यू फॉर टीचिंग मी द वे टू लिव द लाइफ, थैंक यू फॉर टीचिंग मी ग्रैटिट्यूड. इस तरह से फीलिंग आनी चाहिए जितनी बार भी ड्रीम लिस्ट हम उसको हेंस फॉरवर्ड निकाले. तो आज हम 22 करेंगे, कल से थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है हमारे असाइनमेंट्स का. 23 से लेके 28 असाइनमेंट तक थोड़े डिफरेंटली दे लुक, and of course there are things saying thank you to things outside of our life. So but then yes, it's a beautiful chapter, and birthday girl पढ़ेंगी हमारे लिए. So इसमें जो इमेज है उसमें वो आब्रा का डाबरा वाला मैजिशियन की मैजिक स्टिक है, मैजिक वॉन्ड दिख रही है हमको, और मैजिशियंस हैट है जिसमें से रैबिट निकल रहा है, जो हम बचपन से देख रहे हैं आई थिंक, ये वाला जादू करते हुए उनको. और एक लिस्ट है जो बाहर रखी हुई है, और इसी तरीके से हमारी भी लिस्ट पॉप आउट करेगी यूनिवर्स के खजाने में से, जादू की तरह, because the magician's cap signifies that magic, and our life is definitely already full of magics and miracles, we know that, and this is how easy it's going to be. So yeah, let's study this beautiful chapter, Before Your Very Eyes. Hanji Raman, please start reading. Good morning, everyone. It's day 22, Before Your Very Eyes. This world, after all our science and sciences, is still a miracle. Wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. It's a quote by Thomas Carlyle. He is a writer and historian. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of
all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires would come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day, and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me,
was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least two occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. Magic practice number 22. Before your very eyes. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Number 3. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Number 4. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least two occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Raman, for reading this so beautifully for us. Thank you. Thank you So, so much, ma'am. गोइंग फॉरवर्ड हमारी डिजायर लिस्ट के बारे में, तो इसमें दो तीन की पॉइंट्स है. पहला वाला कि आधे टाइम तो जो ये बिलीफ होता है ना कि कितना बड़ा हमारा ड्रीम है और वो पूरा हो जाता है, यही हमारे अंदर नहीं होता. डाउट के साथ चीजें शुरू होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू समथिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू समवन्स बिहेवियर, यू नो, लाइक उसमें हमको यकीन ही नहीं होता है कि क्या ये हो सकता है. कैन दिस पर्सन चेंज, कैन दिस पर्सन ट्रीट मी लाइक विद अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, कैन दिस हैपन लाइक दैट. सो उन डाउट्स को इरेज करना, बिकॉज एक्चुअली इस दुनिया में मैजिक्स होते हैं. और यही थॉमस कार्लाइल ने यहाँ पे बोला है दैट चाहे कितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, चाहे कितना भी लोग साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन देयर इज सम मैजिक पावर विच इज ऑलवेज देयर होल्डिंग अस एंड होल्डिंग ऑल द एटम्स एंड रनिंग दिस होल शो of the world, of the whole universe. You know, the sun coming out, the sun, you know, like going out of sight in the evening, then the stars twinkling in the sky, the clouds formation, the rains happening, the trees growing from nowhere. You know, it is like that. So all of it, like, you know, like बहुत ही एक system से. So कोई तो force है ना जो ये पूरी दुनिया को इस तरह से चला रहा है.
सो किस तरह से एक छोटा बच्चा कंसीव होता है एक मदर की वूम में, एंड दैट बिकम्स अ फुल ऑन बेबी विथ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंटैक्ट और जिस तरह होने चाहिए. सो ऑल सेड एंड डन, हम कितना भी लॉजिक्स में अपना दिमाग लगाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ पावर विच इज ऑलवेज देयर, जिनको हम अभी तक भगवान बोलते आ रहे हैं शुरू से. ठीक है, और हमने उन भगवान को एक ह्यूमन फिगर दिया हुआ है या जो भी है. So, but then that is this universal force. Okay, of course, we call it a universe. We give it a human form or whatever. But जो भी है वो हमारे अंदर के ही भगवान है, जिनको हम स्विच ऑन करते हैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं. But this force, ये जो ब्रह्मांड की शक्ति होती है, this is incomparable. We can't imagine, it's unfathomable. It works out of nowhere, but it is functioning all the time. And that is an energy. At the energetic level it is working. So बहुत easy है हमारे लिए gratitude की energy या अपने आप को उस level तक लाना, so that we can ignite that God inside of us and activate the same force that is there in the universe all the time. ओके, सो कितना भी लोग साइंस की बात करें या रीजन एंड लॉजिक को जबरदस्ती हम डालने की कोशिश करें, बट यस, दिस वर्ल्ड इज अ मिरेकल. इट इज लाइक अ चमत्कार. इट इज वंडरफुल, इनस्क्रूटेबल. मतलब आप उसको क्या एनालाइज करके वो नहीं कर सकते. जादू है या जो भी हम इसके बारे में सोचें, देयर इज अ फोर्स ऑलवेज वर्किंग इन आवर लाइव्स. ओके, अदरवाइज तो ऐसा नहीं होता ना. लाइक इफ आई एक्चुअली सी माई लाइफ टू व्हाट इट वाज टू वेयर इट इज नाउ, इट इज सो डिफरेंट. I mean, like, the way opportunities come, they literally fall on my feet, like it is so effortless. मुझे कभी कभी लगता है that, never knew that life is so effortless. और इसी पावर को हम अपने अंदर इग्नाइट करके, जो ग्रैटिट्यूड की पावर है, उसको हम अपने ड्रीम लिस्ट के साथ में, ऑफ कोर्स, वी आर मैचिंग अप द सेम एनर्जी टू द ड्रीम लिस्ट एंड सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग विच वी हैव लिस्टेड इन आवर ड्रीम लिस्ट. रोंडा बर्न ने बहुत ही कन्विक्शन के साथ ये वाले चैप्टर में बताया हुआ है कि किस तरह उनकी जो सिचुएशन थी, उनको $2 मिलियन का डेट था और उनको 2 महीने का टाइम दिया था बैंक ने कि सारा मतलब जो कर्जा है वो चुका लो, सारे डेट्स क्लियर कर लो, और एल्स उनका घर, उनकी गाड़ी, सब कुछ कॉन्फिस्केट हो जाएगा. और वेल उन्होंने सीक्रेट मूवी पूरी लोन पे बनाई थी, और उसके बाद भी मतलब रिलीज होने के पहले तक उनके पास पैसे नहीं थे इतने कि वो स्टाफ को भी सैलरीज वगैरह दे पाए, तो वो नहीं किया था उन्होंने. तो इतनी बैड सिचुएशन जब उनकी थी, जब $2 मिलियन का डेट, मतलब 2002-3 में, 4 में तो रिलीज हो गई थी सीक्रेट मूवी. सो 2002 और 3 में जब उन्होंने ये मूवी का मतलब मूवी में पैसे लगाए थे और मूवी बनाया था, तो उस वक्त तो खैर उनकी वो सिचुएशन थी, लेकिन उनकी ड्रीम लिस्ट तभी तैयार हो गई थी कि शी सेड दैट लाइक माय सिचुएशन वाज लाइक दैट 2 महीने अगर मैं और पैसा नहीं दे पाती तो मेरा सब कुछ कॉन्फिस्केट हो जाता. लेकिन उस वक्त भी मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई, और उस वक्त ड्रीम लिस्ट में उन्होंने ये लिखा था कि एक टू हैव अ वेरी बिग मैंशन बाय द ओशन. उनको जो गाड़ी चाहिए थी, उनको एक हाई एंड कार का शुरू से बहुत शौक था, तो उनको वो गाड़ी चाहिए थी. उन्होंने वो लिखा था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ फैमिलीज लाइफ, ये लिखा था जो इसमें आज उन्होंने सब कुछ बताया है. उन्होंने ये लिखा था टू बी 100% हेल्दी अगेन, to have beautiful, meaningful, enriching relationships with everyone. And लिस्ट में उनका ये भी था that she wanted to go to बोरा बोरा, जो उनका लास्ट डिजायर था. तो उनके 4 साल लगे सारे डिजायर्स को रियलाइज होने में. और ये जो उनका डिजायर था बोरा बोरा, विच इज लाइक अ फ्रेंच कॉलोनी इन यूरोप, एंड वहां पे जाने का बहुत ही खूबसूरत सा आइलैंड है. एंड अगर हम गूगल करते हैं दैट विच आर द 10 हैप्पीएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, उसमें से झट से बोरा बोरा का नाम बहुत ऊपर आ जाता है. हैप्पी प्लेसेस मतलब वहां पे लोग बहुत खुश रहते हैं पूरे टाइम. तो ये उनका डिजायर था. तो इन्होंने बहुत कन्विक्शन के साथ ये लिखा हुआ है कि कितने भी बड़े अगर आपको अपने सपने लग रहे हैं इस वक्त की, पता नहीं कैन आई हैव अ टर्नओवर ऑफ 1 crore एवरी मंथ और दिस. सो शी सेज विद दैट कन्विक्शन दैट वो मैजिक की तरह रियलाइज होंगे. बिल्कुल हेजिटेट मत करो उनको लिखना और उनके बारे में सोचना और ड्रीम करना.
So that is what she said here, that no matter how big they are, you can always achieve them. So this is how then she kind of, और उन्होंने ये जो ये बताया हुआ है अपने टॉप 10 डिजायर्स में, तो पहले तो डेफिनेटली उन्होंने उसकी भी सॉफ्ट कॉपी रखी हुई थी, बट वो हमको डायरेक्शन दे रही हैं that nevertheless I took my top 10 desires and carried them with me on a piece of paper every day. Okay, so there are messages, for hidden messages for us in the chapter. So she's urging us to do the same, कि हम भी ऐसा ही करें, कि हम अब के बाद से, अभी तक तो हम अपनी टॉप 10 डिजायर लिस्ट पे वर्क कर ही रहे थे, उन्होंने फिर बोला है कि अपनी डिजायर लिस्ट को आप हाथ से लिख लो और व्हाटएवर, बट क्योंकि आज सबके पास आजकल फोन्स होते हैं तो हम उसकी फोटो भी खींच सकते हैं, नहीं तो फोन के उसमें ही मेमो पैड पे आप अपने डिजायर लिस्ट को कॉपी कर सकते हो दोबारा. सो विच एवर वे, या फिर PDF फॉर्म में आप अपने व्हाट्सएप में रख लो. एंड आई होप एवरीबडी हैज देयर ओन व्हाट्सएप ग्रुप, सिर्फ अपने साथ, जिसमें सिर्फ आई मी माई सेल्फ है. नहीं है तो प्लीज बना लो. बहुत आसान होता है वो ग्रुप बनाना. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे मेरा अपना जो ग्रुप है उसमें मैं बहुत सारी वैसी चीजें रखती हूँ जो मेरे लिए है. some the craziest quotes that I love, they have some beautiful affirmations that I love to read sometimes. उसमें मेरे वर्कआउट्स होते हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग के. उसमें मेरे फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं. उसमें वो ब्यूटीफुल इमेजेस होती है दैट आई वुड लव टू सी अगेन एंड अगेन, जो मेरी मैनिफेस्टिव इमेजेस होती हैं. सो मेक दैट व्हाट्सएप ग्रुप फॉर योर सेल्फ ऑन द व्हाट्सएप. वो बनाना आजकल तो मैंने सुना है कि एकदम से वैसे भी बना सकते हो, बट वेल व्हेन वी मेड इट, हमको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में ना मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं. ठीक है, तो 2 लोग चाहिए होते हैं. तो आप अपना और अपनी मम्मा या किसी का बना लो, और फिर अपनी मम्मा को आप एग्जिट कर दो उस ग्रुप में से, तो अब आप ही रह जाओगे. नाउ यू कैन कीप पुटिंग एवरीथिंग इनटू एंड फाइंड अ ब्यूटीफुल नेम, लाइक a nice name for your WhatsApp group. It could be divinity, bloom, blossom, happiness, whatever it is. So you can do that and put all the information that you want to. Some nice videos and reels, अगर आपको कोई मतलब जैसे मुझे किसी भी कंट्री जाना होता है, तो अगर वहाँ की कोई इंस्टा रील होती है, and which I find very fascinating, that I put it in that group and I keep watching it again and again very lovingly and feelingly, so that my tour or my trip to that country becomes so viable. मतलब अपने आप ही सब हो जाता है, क्योंकि जिस चीज को आप लव देते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है. जिन लोगों को पार्टनर्स चाहिए, अपने बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड, यू लुकिंग फॉर अ शादी के लिए पार्टनर, वो लोग अच्छे इंस्टा रील्स जिसमें बहुत सुंदर सुंदर वे ऑफ प्रपोजिंग है, या बहुत ब्यूटीफुल वेडिंग अमालगमेशन कोई ऐसा दिख रहा है, तो वो उसको रख सकते हैं, देख सकते हैं बार बार. उससे वो सेडिमेंट होगी अपने सबकॉन्शियस माइंड में. आपको कोई किसी देश जाना है, कंट्री जाना है, वहां के बारे में कोई अच्छा सा कुछ इमेजेस हैं, या अगेन इंस्टा रील है, आप उसको देखो. किसी तरह की बॉडी चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, उसको आप बार बार देखो कि वो फिट और हेल्दी पर्सन जैसे भी आपको दिख रहा है, उसको बार बार, वो सब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो. वो आपका पर्सनल ग्रुप है जिसमें किसी को एक्सेस नहीं है, राइट? तो वो उसमें आपको जो रखना है उसी में आप चाहो तो PDF के फॉर्म में अपनी ड्रीम लिस्ट रख लो, या फोटो खींच के रख लो, दैट्स टोटली योर कॉल. और उसको बार बार देखते रहो. रोंडा बर्न ने ऐसा ही बोला है दैट वो अपने साथ हमेशा रखती थी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लैपटॉप में है लेकिन यू आर टेकिंग अ शॉर्ट जर्नी ऑफ 3 hours और वो आपके लैपटॉप में ही रह गई, इस तरह से. Always it should be there with you. और जब भी, whenever you have an opportunity, take that list out and read through it, और उसमें खूब सारा gratitude हर एक डिजायर को दो as if वो already हो चुका है. ठीक है, फिर उसमें रोंडा बर्न ने उस अपने डिजायर के लिस्ट के बारे में बताया है. तो वो बोल रही है यहाँ पे दैट मैं अपने सारे डिजायर्स को कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में रखती हूँ, एंड आई वुड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू फॉर इट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे. उसको निकाल के मल्टीपल टाइम्स मतलब 4 बार एक दिन में निकाला, तो 4 बार उसको थैंक यू बोला, उस लिस्ट को फील करके कि वाओ ये पूरा हो चुका है, अमेजिंग, दिस इज सो ब्यूटीफुल, इस तरह कर करके. और फिर उसके बाद रोज ही करते रहेंगे हम ये.
अगर दिन में एक बार अगर सपनों के लिए जी रहे हैं तो कम से कम इतना तो बनता है ना हमारा, that at least once in a day we take the list out and we kind of go through it from start till the end and feel as if it's already achieved. So this is how we have to move forward. तो सबसे पहले तो होमवर्क ये भी है कि आज अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, अगर नहीं बनाया। वैसे तो मोस्ट ऑफ अस हैव मेड इट बिकॉज फ्रॉम डे वन आई हैव बीन टेलिंग यू। एंड वो बहुत क्यूट सा ग्रुप होगा आपका जिसमें सारी अच्छी अच्छी चीजें, दैट फील गुड ग्रुप जो होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट। एंड सो अगर रोंडा बर्न के इतने बड़े बड़े जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स है, इतना डेट में थी, हम में से किसी का 2 मिलियन डेट तो नहीं है ना, है ना? और 2 मिलियन उस जमाने में, वो आज के 200 मिलियन होंगे। मतलब अगर हम एक्चुअली वैसे देखें तब से लेके अभी तक 2002 है, ये 2023 खत्म हो रहा है अभी। सो इतनी पुरानी बात है, ऑलमोस्ट अराउंड व्हाट लाइक गुड 20 इयर्स, 21 इयर्स पहले की बात है जब $2 मिलियन का डेट था उनके ऊपर। और अभी वो 2 मिलियन कितना मल्टीप्लाई हो गया होगा ना उस हिसाब से। तो अगर हम अभी देखें तो वील एक्चुअली सी दैट इट मस्ट बी समवेयर लाइक लिटरली 200। इतना तब से अभी तक में महंगाई हो गया है। सो बिकॉज इन्फ्लेशन तो बढ़ता है ना टाइम के साथ, इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो वो इतना ज्यादा है। तो उसके साथ में सपने देखना, पहली बात तो इंसान क्रश ही हो जाए अगर किसी को इतना डॉलर डेट है, लेकिन उनको पूरा भरोसा था दैट इन दिस मैजिकल वर्ल्ड, बिकॉज शी वॉज मेकिंग सीक्रेट मूवी, और उन्होंने उनकी पूरी रिसर्च टीम ने इतनी अमेजिंग रिसर्चेस करके बताया है कि किस तरह इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे होता है उसमें पूरी। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो इट इज माइंड ब्लोइंग। और सीक्रेट मूवी सेगमेंटेड है 4 सेक्शंस में, करियर, वर्क, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, इस तरह से फाइंडिंग अ पार्टनर, है ना, ऐसे ऐसे सेगमेंटेड है वो पूरी मूवी। सो उसमें तो ऑफ कोर्स उनको पता था कि कितना पावरफुली ये चीजें रियलाइज होती है और कितना आसान है थैंक यू बोल के किसी चीज का बंद दरवाजा खोल देना। सो देन शी स्पोक अबाउट अ बोरा बोरा ट्रिप जो उनकी लास्ट थी। और व्हेन शी वेंट देयर, वो छोटा सा प्लेन था एक्चुअली, बोरा बोरा बहुत छोटा सा प्लेन जाता है जैसे हमारा जाता है ना यहाँ से अमृतसर, जो यहाँ से अमृतसर जाते हैं तो उसमें हम बस 3 सीढ़ी चढ़ के बैठ जाते हैं। सो एवरी टाइम आई हैव गॉन टू अमृतसर, मैं छोटे छोटे फ्लाइट्स में जाइए, अगर कोई 6 फीट का इंसान होता है तो उसको झुक के चलना पड़ता है, वैसा वाला फ्लाइट्स। सो वैसी फ्लाइट से ये गई थी, तो छोड़ कम लोग थे बट bunch of people, but they were super duper happy, they were laughing, they were cheering, and they were so happy to be together, they were so happy to be on the plane, मतलब little joys of life जिसको बोलते हैं ना, they were experiencing that, है ना, that little joys of life. And then she realized that like wow, this was so beautiful. और उनको ये लग रहा था कि मैं इस प्लेन पे फॉरएवर रह सकती हूँ, like I don't need to kind of go anywhere, I want to stay here. So is तरह से, and that was also, as she says, as I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy, क्योंकि वो बहुत ज्यादा grateful थे हर चीज के लिए। They were literally, and she says I could have stayed on that plane forever, वो इतना था। And then she says that जब मैंने बोरा बोरा की ट्रिप करी उसके बाद वो मेरा लास्ट ड्रीम पूरा हो गया। And she says, and the reason I was on that plane was before my very eyes was gratitude. इसीलिए इस चैप्टर का नाम before your very eyes है। Before your very eyes gratitude अगर रखेंगे तो हम देखेंगे no matter how big the dreams are, they will get realized with a lot of ease. Or then I have highlighted these 2 lines here because it says no matter how big your desires seem to be, इस वक्त अगर आपको लग रहा है दैट आज तो मेरे पास 50,000 भी नहीं है बैंक अकाउंट में और मैं सपने देख रही हूँ 5 करोड़ के, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा मेरा इतना बड़ा मैंशन वहां पे, you don't have to worry, just keep dreaming. It is just a matter of time. We don't know that how universe will bring that before us, and it is like jadoo, like life is like a miracle, absolutely, and this is how it operates. Okay, but then हमको वो mental muscle of gratitude को cultivate करना सीखना पड़ेगा उसके लिए। But हम tools and techniques सारे धीरे धीरे सीख रहे हैं, we are almost getting there, isn't it? I think we are getting there, so you're learning fast.
So that's what it says. No matter how big your desires seem to be right now, you can receive them through gratitude. So that is such a beautiful thing to do. और इसी तरीके से हमको तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस है तो उसमें हमको अपनी डिजायर लिस्ट को सुबह सुबह रीड करनी है, एक मिनट के लिए विजुलाइज करना है कि हमारी डिजायर लिस्ट पूरी हो गई है और मैसिव थैंक्स इन रिटर्न देना है ना, ये हमको करना है। और दिन में 2 बार और, तो टोटल 3 हो जाएगा बिकॉज 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। सो सुबह सुबह तो हमको अच्छे से एक डिजायर पढ़ के विजुलाइज करके थैंक यू बोलना है, ठीक है। और बाकी के 2 दफा और 2 times more during the day हमको पूरी लिस्ट को रीड थ्रू करना है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस विल बी एट वर्क दैट टाइम। सो सेकेंड और थर्ड टाइम वाली जो प्रैक्टिस है उसमें डिटेल में विजुअलाइजेशन नहीं करना है, उसमें लिस्ट को पढ़ना है और मैसिव थैंक्स देना है एज इफ इट्स ऑलरेडी फुलफिल्ड। फिर रात को भी एक बार ऐसे ही करना है, ठीक है। और henceforth अब इस लिस्ट को, बिकॉज इस लिस्ट की का नंबर अब नहीं आएगा बिकॉज चैप्टर में 22 इज द लास्ट चैप्टर जिसमें ड्रीम्स, बट ये लिस्ट हमको रखनी है और जल्दी जल्दी हमको सारे डिजायर्स रियलाइज करने हैं। और जल्दी से फिर हमारे साथ शेयर करो, फिर हम ग्रुप में डालेंगे कि आपके डिजायर पूरे हो गए। जैसे मीना के कल 4 इकट्ठे डिजायर उन्होंने शेयर किए थे, पूरे हो गए। और जैसे ही वो 4 डिजायर उनके पूरे हुए तो वो 4 ऐड हो जाने चाहिए बिकॉज वो 10 का जो नंबर है लिस्ट में दैट हैज टू कंटिन्यू। सो द मोमेंट आपका कोई डिजायर पूरा हुआ है, इमिजिएटली आप अपना नए डिजायर से उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। सपोज डिजायर नंबर 6 आपका पूरा हो गया, इमिजिएटली डिजायर नंबर 6 आपका नया डिजायर आ जाना चाहिए। डोंट लीव इट 9 इवन फॉर अ डे, ओके, बिकॉज कीप ड्रीमिंग एंड कीप ड्रीमिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर। Well, you can dream for the smallest things also, but yeah, of course, like बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी करो, छोटी मोटी चीजें तो हो ही जाती है वैसे भी, है ना। सो कितनी भी बड़ी, आपको बहुत सुंदर कंट्रीज में जाना है, आपको कोई चैरिटेबल वर्क करना है, आपको बहुत एक्सपेंसिव से एलवी का बैग खरीदना है, कभी भी ये मत सोचो कि ये मटीरियलिस्टिक डिजायर है और ये है। द वे टू निर्वाणा इज थ्रू इंजॉइंग ऑल द मटीरियलिज्म इन लाइफ, है ना। इसी तरीके से जो वो पूरा जो चक्रा का जो सीक्वेंस होता है, मूलाधार से स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, इस तरह से ये आता ही ऐसा है ना। नीचे के तीनों चक्रास मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुख भोग के, फेम, प्लेजर, मनी, इंजॉयमेंट, ट्रैवल्स, उन्हीं सब से होते हुए आप मतलब वो लेवल आता है when you have enjoyed the worldly pleasure so much that now you want to start sharing it with the world. And then once heart chakra के ऊपर के जो तीनों है, विशुद्धि जो थ्रोट चक्रा है उसमें you're using your communication to empower others' life. ज्ञान चक्रा में you have that intellect that now you can start transforming the world because of it. And सहस्त्र चक्रा, which is the 1000 petal chakra जो ऊपर होता है, that again, like it's already where you are in that supreme enlightened stage. So this is how it actually works. इसीलिए खूब pleasures लो, enjoy करो अपने आप। वो दिन आएगा when you feel that I have so much that I want to start giving it to the world in my own little way or in my own unique way. So whichever, इसीलिए जो आप पूरी दुनिया जब तक घूमी नहीं है, जब तक कम से कम like 25 देशों का भ्रमण नहीं किया है, तब तक किया ही क्या है हमने, है ना। तो इसीलिए go enjoy, the world is so beautiful, there are different small countries that are so exotic, go and savor the joy. Traveling is the best education. This is what I've seen. No matter how much books you read, no matter what you do, कितना ज्ञान प्राप्त कर ले हम, कितना भी कुछ कर लें, but travel is the real knowledge. If someone said it, it's that person said it right. The real learning, the real knowledge is when you travel and you really get to know the cultures of those places, and enjoy the best of health, है ना। चाहे कितना भी किसी ने चैलेंजिंग सिचुएशन दी हो कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती या ये ऐसे नहीं है, वो सब पास्ट कंडीशनिंग की बातें होती है. दे आर ऑपोजिट टू मिरेकल्स, दे आर ऑपोजिट टू इवन मैजिक. Okay, anything, any bimari, if you've heard that ye nahi theek ho sakti, wo nahi theek sakti, so opposite to magic. You don't know how the universe operates.
सो जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा हुआ था पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में, that the God who has created every nerve and fiber of your body knows how to repair it also. So जो create करता है उसको पता है, अगर मैंने कोई मशीन बनाई है तो मुझे उसका एक एक पार्ट पता है कि एक वायर यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे मेटल चिप है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो क्या मुझे उसको ठीक करना नहीं आएगा? उस मशीन को जो मैंने ही बनाई है, तो मुझे तो देख के पता लग जाएगा कि हाँ ये मेटल चिप है, ये डिफेक्टिव हो रही है, यहाँ से ये वायर जा रहा है, इसमें कोई थोड़ा सा वो गड़बड़ हो रही है, उसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक कर देती हूँ। सो इसीलिए उसमें हर जगह ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में ये लिखा हुआ था that the God who has created this body knows how to heal and repair it also, no? So but then that trust in God has to be there. जब तक हम इस बिलीफ के साथ चलते रहेंगे कि मैं ठीक नहीं हो सकती और मेरा नहीं ठीक हो सकता, हमारे इस ग्रुप में जो लोग शुरू से आ रहे हैं उन लोगों की कितने सारे बीमारियां ठीक हुई है ना, मतलब बिल्कुल दवा रुक गई है 100%, and there has been a miraculous healing. So we've seen those kind of things, isn't it? Everybody said that type 1 diabetes ठीक नहीं हो सकती and all of that, and pancreas खराब हो जाता है, हम भी यही पढ़ाते हैं, मैं भी अपनी किताबों में ये लिखती हूँ, लेकिन बिलीव ये नहीं करती, ठीक है। बिलीव मैंने ऑपोजिट इसका देख लिया है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन बॉडी में हो, आप 100% हील एंड रिपेयर हो सकते हो। तो इसलिए चिंता की, घबराहट की, सेल्फ लिमिटेशन की कोई बात नहीं होती है, बस करके तो देखो, यू नो, लाइक do it, see it, experience it, and then you will savor the real joys of life, because फिर जैसे जैसे ये हमारी ड्रीम्स रियलाइज होंगी वैसे वैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा कि वाओ, मतलब मैंने ये अचीव कर लिया, फ्रॉम द प्लेस आई वाज दिस लुक्ड सो इम्पॉसिबल एंड टुडे हियर आई एम and I'm like really kind of enjoying the best of life. So this is how you become, and all the while you're also becoming such an amazing person yourself, you know, मतलब वो सब भी साथ साथ चल रहा होता है. Yeah, so that is what is about today's chapter. So subah subah count your blessings, writing the 10 blessings, rereading them and saying thank you 3 times out loud. उसके बाद at the start of the day, सुबह सुबह आज अभी हमको सेशन के बाद अपनी टॉप 10 डिजायर लिस्ट लेनी है, फिर एक एक पढ़ के हमको 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है कि हमने वो डिजायर अचीव कर लिया और हम कितना अच्छा फील कर रहे हैं, और दिल में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करना है, और इसी लिस्ट को दिन को 2 बार और हमको निकाल के पूरी लिस्ट पढ़ के बस थैंक यू बोलना है ना। विजुअलाइजेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, इफ यू कैन सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। सेकेंड टाइम विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू बिकॉज बाहर होते हैं या कुछ, बट थर्ड टाइम रात को अगर आप घर में हो गए और अगर आपको मिलते हैं 5 मिनट तो फिर उसको विजुअलाइज कर लेना थोड़ा सा। सो वैसे तो हमको बस रीड थ्रू इट करना है सेकेंड एंड थर्ड टाइम, और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, होल्ड दैट रॉक इन योर हैंड एंड फिल योर हार्ट एंड माइंड विद ग्रैटिट्यूड, एंड देन पिक आउट द बेस्ट थिंग फ्रॉम ड्यूरिंग द डे एंड उसको थैंक यू बोल के सो जाओ। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट टुडेज चैप्टर। अब हम चलते हैं दूसरे वाले बुक, हीरो बाय अगेन रोंडा बर्न, द सेम ऑथर, जिसमें हम हमारा ये वाला जो सेगमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस माइंड, हमारे 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस हमारा 5 सेंसेस से प्रभावित होता है, इट्स ऑलवेज एनालाइजिंग, थिंकिंग, जजिंग, यू नो, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल ब्रेन होता है, एनालिटिकल ब्रेन होता है, और एक सबकॉन्शियस, और ये कॉन्शियस माइंड सिर्फ 4% यूज होता है, बाकी 96% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको राइट एंड रॉन्ग नहीं पता होता, बट सबकॉन्शियस माइंड इज व्हाट वी सी इन द आउटवर्ड रियलिटी। Okay, so whatever हमारी जो किस्मत है, हमारे whatever we see around us, the kind of families we are in, the kind of situations we fall into, everything is coming from the subconscious mind. Subconscious mind बहुत trainable होता है, it is a hard disk जिसमें बहुत जन्मों का डेटा फीड होता है, और उस हिसाब से हमको हमारी आउटवर्ड रियलिटी नजर आती है। लेकिन द ब्यूटी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज कि बहुत ट्रेनेबल होता है ये, और इसमें चाहे कितनी भी पुराना डेटा स्टोर्ड है,
लास्ट टू लास्ट लाइफ टाइम का, जब हमारी लाइफ बहुत ही अनहेल्दी थी और हमको बहुत बीमारियां थी, तो वो डेटा स्टोर तो है, जिसके कारण आज भी हमारी हेल्थ में कुछ चुटपुट चुटपुट ब्रेकडाउन आते रहेंगे, एंड वी डोंट इवन नो दैट 2 लाइफ टाइम पहले ऐसा कुछ था, राइट? बट you can take a fraction of a second and transform it and change that data. फटाफट वो रिमूव करो पुराना डेटा, नया डेटा फीड करो. आई एम गेटिंग healthier and healthier, feeling better and better every day by day and night, and I'm loving my health. I love life. Life is so beautiful. Money is constantly coming. You know, I have a perfect ideal body weight, or whatever it is you want to talk about your health. You can write paragraphs and paragraphs, kind of enjoying your health, and about it, or appreciating your health, and you will see that very soon that will become your outward reality, क्योंकि आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में पढ़ रहे हो, उसी के बारे में बोल रहे हो, उसी को लिख रहे हो. आपकी स्क्रिप्टिंग में भी यही लिखा हुआ है, आपके ड्रीम लिस्ट में भी यही लिखा हुआ है, विजुअलाइज भी आप वही कर रहे हो. तो कैसे नहीं होगा? वो 100% होता है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स सबकॉन्शियस माइंड. तो हम उसी के बारे में कल हमने बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस और इन लोग के गाइडेंसेस पढ़े, जो हमारे 12 बिग विग्स हैं. ठीक है, सो वी कंटिन्यू डूइंग दैट. यस ज्योति, यू रीडिंग फॉर अस? Yes, ma'am. Good morning. G.M. Rao. I strongly believed in my vision of creating value for society. In spite of two significant setbacks that could have derailed my life, I persevered because my values and unflinching commitment were aligned with the will of the universe, which supported me unconditionally. There was never a doubt in my mind. Yeah, so this again needs some training, that failures अगर आते हैं तो उनसे डरो मत. They are not telling us that, oh, you're useless and you can't do it, or you don't have the power to do it. So GMR की तो success story is like amazing. मतलब आप एयरपोर्ट में, यहाँ पे दिल्ली में भी एरो सिटी में घुसते हो, you see GMR 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 everywhere. So the world is praising. बन गए ना ये ग्लोबल आइकॉन बिल्कुल. सो कहाँ से कहाँ इनकी तो लिटरली बिल्कुल रैग्स टू रिचेस स्टोरी थी. अगर आप चैप्टर 1 में थे हमारे साथ, तो आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से उनको बाल्टी लेके पानी की लाइन में खड़े होना पड़ता था, जब क्योंकि घरों में पानी नहीं आता था, और मतलब बिजली नहीं थी जहाँ पे ये रहते थे. बहुत ही छोटे से तबके में रह के कहाँ से कहाँ ये पहुंचे. तो इस तरह वहां से निकल के फिर उन्होंने इंजीनियरिंग को पढ़ा, शहर गए, लाइक किस तरह से. तो सेटबैक्स तो आए हैं. इन्होंने ये लिखा है कि मैं मतलब 2 बार ऐसा डिरेल हुआ कि जब लग रहा था मेरा सब, मतलब सेटबैक लाइफ में आए थे जो टोटली इनकी लाइफ डिरेल हो गई थी, लेकिन इनको ये पता था दैट आई वांट टू रीच दैट लेवल दैट नो वन हैज एवर गॉन बिफोर. ओके, सो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम उन लोगों से सीखें जिन्होंने ऑलरेडी ये चीजें अचीव कर ली है जिंदगी में. बहुत जरूरी होता है. क्यों लोग ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं? ऑटोबायोग्राफी सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जो लोग जिंदगी में कहीं पे पहुंचे हुए होते हैं, इजंट इट? ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी थोड़ी बनती है जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है जिंदगी में. सो बिकॉज दे वांट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड. वो इंटेंशन एक ऑटोबायोग्राफी का यही होता है, दैट दिस इज हाउ आई हैव डन इट, नाउ यू ट्राई एंड अडॉप्ट द सेम प्रैक्टिसेस एंड ट्राई एंड exceed me. I mean, that's what, you have to always exceed your mentors. That is the biggest reward and the gift you can offer to your mentor, that आप उनको भी exceed करें हर मामले में. तो उस level of thinking को होना बहुत जरूरी है. So yes, we'll continue. Yeah. ज्योति, unmute करो. Laird Hamilton. I truly believed I could achieve my dream. I couldn't have achieved what I have been able to do without truly believing it. Now, it doesn't mean I didn't have doubt, because doubt is ever present, always looming and circling and trying to get a hold of you. But I didn't embrace the doubt. Believing in yourself doesn't mean there won't be moments where
where you question your ability to achieve your dream. Just a second. Want me In to those, shift it up and down? no, it's okay, ma'am. Okay. It's fine. In those moments of, I'll read it again. Believing in yourself doesn't mean there won't be moments where you question your ability to achieve your dream. In those moments of doubt, just bring your mind back to the very next step you have to take, because you will find it's easier to believe you can take the next tiny step rather than have your head spinning with the whole journey ahead. And when you think about it, you can only take one step at a time on the hero's journey, and one step at a time is all that every successful person took. When you are feeling happy, your belief will be strong. If you are feeling tired, discouraged, under the weather, or lacking energy, that's when doubts come in. Everyone has those moments, so remind yourself that the way you are feeling is temporary and it will pass. That's why it's so important to follow your bliss every day, because in doing that you will be happy, and as a consequence your belief will be strong. सो दे आर ऑल टेलिंग दैट हम सबके जब हम जर्नी पे जाएंगे, किसी भी बहुत बड़ी जर्नी पे, माउंटेनस जो जर्नी है, उसमें डेफिनेटली देयर बी मोमेंट्स जब रास्ते में कांटे भी आएंगे, जब बोल्डर्स आएंगे, जब रॉक्स के ऊपर पैर रखे हमको आगे जाना होगा, एक्सेट्रा. सो इस तरह, बट नेवर बी स्कैर्ड. आई मीन दैट्स हाउ वी बिल्ड मसल्स, इजंट इट? अगर माउंटेन के ऊपर चल रहे हैं, जब तक अपने बहुत थाइज और काव्स के मसल्स स्ट्रांग नहीं होते, तो थोड़ा सा चढ़ने में दिक्कत आती है, बट धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते इतने पावरफुल मसल्स हो जाते हैं हमारे दैट हमको, मतलब इट्स सो इजी टू वॉक, देन नथिंग लाइक कैन सेट अस बैक. सो दैट्स व्हाट इट सेज, दैट यस, आई इसमें जो बोल रहे हैं कि आई ट्रूली बिलीव्ड इन माय ड्रीम, बट लाइक ऐसा होता है कई बार कि आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो, और विच इज, और आपको लगता है कैन आई इवन डू इट, बट इट रियली डजंट मैटर. इट सेज दैट हमेशा अपने आप को लाइक ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू द नेक्स्ट स्टेप दैट यू कैन टेक. ओके, यस, यू नो द टारगेट जो भी आपने सेट कर रखा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में सोचो. जैसे अगर आपने अपना बिजनेस कोई शुरू करना है या कर लिया है, अब आपको लग रहा है कि मुझे उस हिसाब से मैं मार्केट नहीं कैप्चर कर पा रहा या कर पा रही हूँ जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए, ठीक है, तो अपना आपका नेक्स्ट स्टेप होगा टू जस्ट नो अबाउट दैट हाउ आई कैन कैप्चर द मार्केट. ठीक है, इतने सारे बिजनेस आइडियाज आपको यूट्यूब पे मिलेंगे. बहुत बड़े बड़े लोगों ने, राहुल जैन और इन सब के जो सेमिनार्स हैं, बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं जो इन्होंने लिए थे. ये सब पैसे लेके करते हैं, बट इवेंचुअली ये सब डाल देते हैं. टोनी रॉबिन्स ने जितने भी पैसे लेके किए हैं ना वेबिनार्स और सेमिनार, वो इवेंचुअली सारे वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देते हैं, because he wants to reach out to a larger scale so that they also become successful. Unleash the power within, टोनी रॉबिन्स के सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लाइक जितने भी, और वो सब पहले पेड होते थे, बट वो सब है. तो आपको बहुत गाइडेंसेस मिलेंगे. इफ यू रियली वांट टू थ्राइव इन योर बिजनेस एंड यू वांट टू नो अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट बिग स्टेप टू बी टेकन, isn't it? Like when we were studying, when I was doing my masters and all, we did not have computers and all, no, हम बहुत manual work करते थे. I'm sure everybody who's done the masters earlier on, like even in 90s, they would not know, I mean like इतना ज़्यादा computers नहीं use करते थे, होते ही नहीं थे. मतलब थीसीस भी टाइप कराने के लिए वो टाइपराइटर वाले, मतलब किसी वहां पे जाना पड़ता था हमको, जो थीसीस टाइपिंग का एक्सक्लूसिव काम करते थे, और वहां पे. सो बट देन ऑल ऑफ अस टुडे हैव लर्नड, नो, हम लोग कितनी आराम से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. आई एम वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, like when I write books, I edit, सारे एडिटिंग टूल्स मुझे मालूम है, सब कुछ सब पता लग गया ना अभी. इसका मतलब है that I have made an effort to learn that, no.
when coming from that era when मतलब desktop पहले होते थे वो बड़े बड़े से projected पीछे की तरफ और bulky से, it was laptops का इतना जमाना ही नहीं था, but now all of us are so good at it. I mean like most of us are very good at computers and हमको उनके programs अलग अलग पता होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, isn't it? Mobile use के कारण भी I think we've all become like so pro them. So this is how we have to. So what is that next big step? आपको हर तरह की information कहीं से भी मिल सकती है. Just don't think like a loser. Okay, that's not what we are allowed to do here. I will not allow you to do that. Forget about who does what. So this is how it is. And it says that, and when you think about it, what is the next step to take? You can only take one step at a time on a hero's journey. And that one step at a time is all that every successful person took. So they were not doing like 100 things at one time. They were just thinking that, okay, right now I'm here. That is where I want to reach. तो उसके लिए मेरा next step क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए. अच्छा ठीक है, अब market establish कर लिया, अब मुझे क्या करना है? अब रीच आउट कैसे करना है कि आई गिव देम सच अ प्रोडक्ट जो बहुत ही सेलेबल है, जो यूनिक है. अच्छा, अब सेलेबल और यूनिक प्रोडक्ट कैसे बनाना है? इट कुड बी एनीथिंग. So in the market these days, the content has to be good. You have to be different from what everybody else is doing. So using your creativity and bringing it into full projection is very important. Although I'm not a business person, but acumen business का है, मतलब पता है that when you have to be unique, saleable, and different from the rut, that is how you become more. I mean like people notice. अगर बहुत सारे ब्लैक डॉट्स हैं और एक रेड लगा हुआ है ना डॉट, तो अपने आप लोगों की नजरें वहां पे जाती है. सो बी दैट रेड डॉट amidst all the black dots on the paper, so then you look different. And there has to be all these 12 people we are studying about, they had some uniqueness into them, and bring that into the forefront by making something that everyone else is not doing, by doing something that everyone else think differently. And well, we have all the tools to do it, जो हम अभी तक सीख रहे हैं. And then, well, enjoy the journey of life and become a billionaire and give employment to so many others and sustain the livelihood. उसके ऊपर अपने ऊपर विन करना बहुत जरूरी है. जब भी दुनिया को विन करने के लिए अगर चले और अपने छोटे छोटे आदतों और चैलेंजेस के ऊपर विन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? तो इसीलिए लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर विन करो, लेट सोने के लिए रात को उसके ऊपर विन करो, सुबह टाइम से उठो, फील गुड अबाउट इट, उसके ऊपर विन करो. सो दैट इज हाउ, आई मीन लाइक जो अपनी छोटी कमियां हैं, बहुत स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, उस पे थोड़ा विन करो. अगर इफ इट इज अफेक्टिंग योर वर्क, ओके, उस पे विन करो. कुछ नई टेक्निक या कोई कंप्यूटर स्किल सीखना है, उस पे विन करो. सो मेक स्मॉल विन्स इन लाइफ एंड दैट स्मॉल विन बिकम्स अ वेरी लार्ज विन, एंड देन यू विल हैव अ ब्यूटिफुल स्टोरी टू शेयर विद ऑल ऑफ अस. सो दैट इज व्हाट इट इज. हाँ जी. GM Rao, you have to invest belief in your dream. Be confident that what you want is simply the best thing in the world for you. Without that belief, what follows is a half-hearted approach without effort, determination, or persistence. Many times, the fear of failure is behind this lack of conviction. हाँ, एक्चुअली शुरुआत ही ऐसे ही होती है. ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये सक्सेसफुल होगा क्या, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं करूँ क्या. आई एम नोबडी टू टेल. ठीक है, मुझे नहीं पता होता आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं. यहाँ पर डाउट से ही शुरू करना है तो फिर वेल, आई मीन लाइक वन कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. मैं तो ऐसे नहीं शुरू करती. मैं तो कोई भी काम करती हूँ, आई डू इट ओनली टू विन, अदरवाइज आई डोंट डू. If I know that I'm not, if I can't put my 200% into it, then I never do it. If I have to go somewhere also, I'll never go half-hearted. I will go 100%. I'm present there, full on. People who partied with me know, no matter how busy I've been before that, no matter how sick I am or whatever it is, if I'm doing it, I will do it like full on. Like मजा करूंगी मैं उस पार्टी में, नाच गाना ये वो, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है, चाहे कितना भी मेरा टाइट स्केड्यूल है, चाहे अगले दिन मेरी फ्लाइट हो या कुछ हो,
So if I'm doing the session, तो मेरा दिमाग नहीं रहेगा. Have you ever seen me distracted? I'm never distracted. वो हो जाए, चाहे वो आग लग रही हो, I don't care. If I'm doing this, I will do this. This is what I have learned and trained myself to become like that. Okay, nobody is born, with all these things. We cultivate these. है ना, जैसे cultivate करना पड़ता है, strive करना पड़ता है, taking that big step. So it is like that. So this is how we have to carry on in life. So GM Rao बोलते हैं कि आप पर मतलब कम से कम confident तो रहो कि आपका जो भी है, like it's going to, that I have belief in myself and I will be able to do it. So वो ये बोल रहे हैं that what follows is a half-hearted approach without effort. अगर आपको believe नहीं है, इसका मतलब half-heartedly आप कर रहे हो. न determination है, न persistence है. So fear of failure कभी नहीं होना चाहिए. और होता भी है तो ठीक है ना, दोबारा उठ जाओ. It is just all right. I mean, I've also stood on those perils to be able to become, like I have a name in my industry, or I've already have like 2 lifetime achievement awards for my work. And like being recognized by my own organization. Actually see my wall of fame जो है यहाँ पे, उसमें आधे से ज्यादा तो VLCC के है. मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अवार्ड्स दिए हुए ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर, एंड देयर सो मेनी ऑफ देम फ्रॉम, आई थिंक 5 ऑफ देम आर ओनली फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन. 5 तो मुझे 2 साल में है, जो मैं तो 11 साल से यहाँ पर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके पहले के भी इतने सारे हैं. So it is not that someone outside, and of course वो dietetics association और वो तो recognize करते रहते हैं. So it is like it has not been easy. That's what I'm saying. This journey or the own company recognizing your work and your effort and small little things, it's not been easy. There must have been, I mean, there were moments when it was the dead end. So many times in my life I reached the dead end. So many times in these last 11 years also, जब मुझे लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हैं, अब क्या करो, तो उसमें यही तो होता है that come on, I know everything is always working out for me for the best. I know all's well. And this is what you have to keep telling yourself, and then taking that first next step. And then a huge door opens and a huge boulder gets pushed off on the side. And then there is a beautiful sunlight coming in, the way starts. That's how it works. And that is how they all have achieved what they have. Hanji. Maston Kip. My mom told me I can do anything I set my mind to. So I literally believed her. I knew from the beginning that when I really set my mind to do something, something big will happen. Okay, such a cute thing to say. Maston के बोल रहे हैं, मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि मुझे जिंदगी में जो अचीव करना है वो मैं कर सकता हूँ. तो मैंने अपनी मम्मी की बात को बिलीव किया कि मेरी जिस चीज पे मेरा विजन जाएगा वो मैं अचीव कर सकता हूँ. और ये फिर मुझे शुरू से पता था कि मैं जिस चीज में मैंने सोचा है, समथिंग बिग विल हैपन, दैट वॉट एवर आई डू आई विल डू समथिंग बिग. कितना अच्छा एफर्मेशन है ये, है ना? That when I really set my mind to something, something big will happen. I just have to put my attention on it and something big will happen. So I do only big things in life. I don't do small things, isn't it? That is what he's saying here, Maston Kip. I knew from the beginning that when I really set my mind to something, something big will happen. अब ये कंडीशनिंग और ये रेपिटेशन इनके दिमाग में एक्शन रिप्ले की तरह चलती रहती होगी ना, क्योंकि इन्होंने जब हमारे साथ शेयर किया है तो इनके दिमाग में ये था कि मैं तो जो काम करूंगा मैं तो बड़ी बड़ी चीजें ही करूंगा, इसी के लिए बना हुआ हूँ, छोटी मोटी चीजें नहीं करनी मैंने, है ना? समथिंग बिग विल हैपन. एंड सी वेयर ही रीच्ड. सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज. हाँ जी. Lord Hamilton. My mother believed that I could walk on water. Her belief was less about the goal and more that I could be a good person. But that gave me the strength to believe in myself. Everybody who is got somebody who believes in them has got to hold on to that person. That's the person they need to be around. So thank you, Jyoti. We'll be able to read only so much today. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
या सो लेड हैमिल्टन सेज हियर कि उनकी मदर ने उनको ये बिलीव कहा था और उनको बोला था कि तुम चाहो तो तुम पानी पे भी चल सकते हो, वॉक कर सकते हो। मतलब इसका मतलब है कॉनोटेटिवली दैट आप इम्पॉसिबल चीजें भी कर सकते हो, नो मैटर हाउ बिग or impossible things look to be right now, you're capable of doing even that. You can even walk on water. So इस तरह की बिलीव के साथ वो अपना काम, अपने गोल को साथ लेके चलते थे। And well, that gave him the strength that eventually I can do whatever it is that I want to do. And that's about it. So this is what we have learned from all these people. Anesthesia का हम कल पढ़ेंगे। So कल का सेशन मैं थोड़ा सा मतलब I will be able to take only till about 6:40 or something, प्रिया। उसके बाद आप ले लेना, मेरी सुबह अहमदाबाद की फ्लाइट है। तो मुझे 7 बजे निकलना होगा। So I'll be in Ahmedabad tomorrow and फिर अहमदाबाद में मुझे कुछ घंटों का ही काम है, वहां से I'll fly down to Pune and be there till Saturday evening. So well, the sessions are happening from different cities now. So but there'll be it's a late flight tomorrow, so it's all good. So yeah. So beautiful sessions and a great learning from all these people. I'm thoroughly enjoying this hero book क्योंकि मैंने खुद ये पूरी तरह से 100% पहले नहीं पढ़ी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस किताब को पढ़ना। मुझे वैसे भी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का, मैंने बहुत सारी पढ़ी हुई हैं। मैंने बिल गेट्स की पढ़ी हुई है, मैंने प्रियंका चोपड़ा की पढ़ी हुई है। सो विच इज अनफिनिश्ड, जिसका नाम है। सो ऑडियो बुक के फॉर्म में ही पढ़ा था। 7 hours लॉन्ग किताब है, तो उनकी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, इनकी बहुत अच्छी। सो आई लव रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज और रीडिंग जस्ट लाइक just 4-5 pages, some content about all these great people who achieved what and how, and what is it that took them to reaching those great heights. It's really a good learning, makes us more tougher, strengthens our belief, and gives us that conviction and confidence that no matter whatever our dreams are, we will be able to become the best version of ourselves and achieve them, and with tenacity, with a lot of determination and conviction. So yes, we have 2 hands raised. We can listen. Yes, Ritu. There's a small question, Dipti. When you say debt, like Rhonda Byrne was in debt. So what is the thing that you should write in your dream? Financially free. Yeah. Yeah, financially free. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Hi, Rachna. Please share. Hello, Didi. Good morning. Good morning. So, just wanted to share. कल मैंने magical outcome लिखा था. Yesterday I had a competition in my office, and morning I wrote a magical outcome. What competition was it? It was on the Bay decoration. So we have a leadership visit from outside India, and we had to decorate on the basis of Diwali theme. And I won it. So I just wanted to share it with the group. And it was like all the other team, I got stuck in traffic, and then I was late also, and everyone started messaging me because majority of staff for decoration was at me. They started messaging me that everyone has started, come soon, come soon. And initially, thoda sa I went down, ki no, everyone has, almost people were done when we started. And we started also late, but still that hope and that faith was there. And I wrote the magical outcome before leaving from home, and I won it. Wow, congratulations. Enjoy the moment. These Thank little you. creations in life give us so much of conviction, no? That you can do anything. Yeah, it increases the belief and the faith. Yeah, actually. And anyone else's magnificent outcomes? Always happens, ma'am. Actually, I It's मैंने a वो daily yoga teacher affair, no? होना Yes, yeah ma'am. Magnificent me outcome was. actually yeah I actually wanted to get a trainer for my exercise routine and all. So eventually I got that also. पहले I was not into this कि मुझे लगता था कि नहीं I cannot do this, मतलब there are some health limitations, I cannot work out much and all. But I tried like मैंने online भी try किया, but I felt कि नहीं, it's always like good to go and physically you go and
get trained yourself. So I got that, and it was amazing. Yeah. Yesterday I like booked it. Like परसों का मेरा काफी वो था कि like it was a what do you call, trial class. But yesterday the magnificent outcome was that I booked that class and I'll be Finally doing got a that. trainer. Yeah. Roped in. Finally. And I like that lady also. She is in her late 50s, I think, but she is so energetic and absolutely bindas personality. I Yeah. love that. Yeah. Yeah. Thank you. Amazing. That was a magical Congratulations outcome. on your fitness journey. Yes, ma'am. Thank Okay. you. मैम So me yeah, also thank like I had 3 magnificent outcome. उसमें मुझे एक तो मेरे यहाँ मेरे मतलब फैमिली में शादी है, so I had to do the packings. मेरी कल fittings थी और मुझे पढ़ना बहुत है because I'm doing some course. So I was thinking मैं सारी चीजें कैसे fit करूंगी, but मेरी मतलब मेरी तीनों चीज बहुत अच्छे से हो गई है. जो मैंने सोचा था कि मुझे ये देना है आयरनिंग में, ये ड्राई क्लीनिंग में, वो सब हो गया. एंड स्टडीज आल्सो आई कुड डू माय 1-2 modules I could do yesterday along with I went for my trials also. So yes, it was very nice. Otherwise I keep on telling myself कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, but yes मैं तो आज भी करने वाली हूँ अभी फर्स्ट सेशन के बाद. Yeah. So this is actually amazing. So मेरे भी magnificent outcomes थे. I really wanted to, kind of finish all the बहुत मतलब कंपनी के इतने वो travel advances और कुछ कुछ पैसे होते हैं ना. I wanted to submit the bills and do everything and get over with it. क्योंकि वो इतने pending हो रहे थे on and off for दिवाली का पूरा वो बीच में आ गया था. So I had written magnificent outcome to, and like 100% clearance of all the allowances and everything. I did that. And then of course I wanted to write the book on gastrointestinal disorders, that book that I'm writing right now. मैंने शुरू भी नहीं की थी अभी तक. So उसका मुझे major chunk था that before I head to Ahmedabad and Pune, I'll just write that. So वो मैंने major chunk लिखा कल, in spite of all that business. And then third I'd written was surprise and fun and some lovely time with my office co-workers, because I had not been able to spend as much time with them because Diwali वगैरह के time मैं तो नहीं आ रही थी office. I wasn't that well, so I was working from home. So कल then हमने बिरयानी बाई किलो से मंगवाई और खूब मजे किए. Then रुमाली रोटी and सोया चाप order किया सब बार का. And like had so much fun having it. Was so much of joyful cheer and laughter in the office, all of us, ऐसा लग रहा था one big family. और फिर उसके बाद we all love that rasgulla from Gopal ka. So we walked down, all of us, imagine a bunch of 9 people. We were 9 of us together in our core team. So 9 of us walked down to Gopal's to have that, that chilled rasgulla. I mean, I really love. जब COVID peak पे चल रहा था, तो मैं खान मार्केट जाती थी गोपाल का वो रसगुल्ला खाने के लिए, क्योंकि वो दुकान खुली होती थी और उसमें आगे रोप लगी होती थी, उसके पीछे से वो डिलीवर करते थे. So yeah, I mean, like these 3. So I didn't know that hamara lunch time will be so interesting and so joyful, full of laughter. I just, wanted to have some quality time because I knew that now on and off, I'm not going to be around in office. ऐसे ही है, अभी ट्रैवल करके भी आके कुछ engagements हैं ऑफिस के ही, मतलब इधर उधर जाना है, फिर वेबिनार्स हैं, फिर अब travel back, and then like official travels हैं, फिर गोवा है, मतलब दिसंबर तो बहुत ही action packed है मेरा. So then I thought that these are my 3 magnificent outcome also came out to be so amazing in the most magical way, and it was so priceless. I think in all 3, the moments that I got to spend and the work that I accomplished was like really that easy. It was very easy. It's not easy to just start writing on gastrointestinal disorders, but the words were just flowing out and I made some amazing content. So yeah, it was like that. So yeah, beautiful. Enjoy the journey and see you all tomorrow. I'll be there And for the first Soumya's 40 hand is minutes. raised, ma'am. Soumya's hand is raised. Soumya ka Soumya's hand hand is is raised. Yes, Soumya. Just wanted to add on that magnificent outcome. So I do this not just on the day it is there, but every day. I think every 2 to 3 days I do this because I have to go to shop for vegetables because I don't have a fridge. So I set
so of course it is there in the head ki magnificent outcome to that shopping all the time. लिखना भी नहीं होता है, दिमाग में ही set है. But before going I set कि ये चीज चाहिए और इतने रुपए में चाहिए, and I just go. I'll do walking. Thank you. जब जा रही हूँ पेड़ पौधों को thank you and all that. Enjoy करते हुए जाती हूँ literally. I go. कल भी वैसे हुआ. I went. So there are fixed vendors. Like अभी fix हो चुके हैं. Like by connect, right? कल उन्होंने इतना ज्यादा प्यार दिया. Like I wanted to tomatoes. मैंने 25 rupees वाले ले रहे थे. I gave her the vendor कि ये दो half kilo. She literally picked out few tomatoes from 25 rupees, kept it outside, and जो 30 rupees में sell हो रहे थे उनके 2-3 उसमें डाल के she gave it to me. Like she weighed those nice plumpy from 30 rupees one into my 25 rupees. वहाँ पे लोग 25 rupees वाले पिक कर रहे हैं और यहाँ पे वो दीदी ऐसे लेके मेरे टोकरी में डाल रही है. And then I went by लीफी वेजिटेबल और मैंने मेथी ली और मैंने बोला दीदी करी लीव्स भी दो. तो she just gave me and she took 10 rupees. I said how much for the curry? She's like it's okay, it's okay. She said her husband was asking how much it is. I'm also like how much it is. She's like उससे क्या लेना, वो तो घर की है, तुम जाओ जाओ. ऐसे she just dismissed it like anything. So literally 5 minutes की shopping होती है. I just go in. It's a big vegetable market. 5 minutes में the legs automatically take me to the vendors who are selling at that rate only. I go, I pick the best vegetables and I'm out. Like मुझे वो shopping करना बहुत थोड़ा, I'm like not feel good नहीं होता है. So this is the best You want to solution. finish it faster. Yes, yes. As soon as I start seeing lot of option, I start going crazy. I'm like, oh, ye lena hai, wo lena hai. Lot of option is not good. So as soon as I go in, 5 minutes out. So it's all to those people who don't like shopping or who want to do shopping quicker. This is the best technique ever invented. Wow. Thank you, Great, ma'am. amazing. This is so And this good. is also my most continuous practice. This is what is that? This Favorite is practice. so my most commonly used practice, and I always get awesome results. Yeah. As simple I to guess as big, I always get awesome results. Yeah. So this is actually yesterday, if you remember, that when I began reading the chapter, and this is the first thing I said, this is the most overused practice by all of us, because it's a moment to moment practice. You know, every next moment that we are doing, we can, you know, actually put in our magnificent outcome practice and then savor the consequence and outcome. Yeah. And Dipti, I Yes. wanted a very good face wash for myself. तो मुझे लग रहा था कि आपसे पूछूं, फिर मुझे लगा नहीं I'm हाँ, not into beauty no and no all no of no that at किसी का कोई all. प्रोडक्ट सो मेरे को नहीं मिल रहा था. फिर एक तो मुझे घर में ही वो फॉरेस्ट एसेंशियल का मिल गया. एंड इवनिंग आई जॉइंड मीना का क्लासेस फॉर सम टाइम. सुनैना ने ज्वाइन किया तो मुझे लगा सुनैना पहले वो बताई थी ना वो SPF वाला सागा या समथिंग. इट वाज गुड. वो जो रागा, अरे sunscreen था. that is the sunblock that I use. या So या मैंने या सुनैना के साथ शेयर किया या था. तो दैट आई हैड बॉट एंड इट इज गुड. तो मुझे लगा सुनैना से पूछूं. तो शी गेव मी Raga अ is very वेरी गुड good. घरेलू वो आप उपाय उसको एंड इट वाज WhatsApp करके वंडरफुल. पूछ लीजिए. WhatsApp नहीं करके नहीं पूछ लीजिए. नहीं वो थी वहां पर. शी वाज देयर एंड शी टोल्ड मी. बताई कल. इट वाज अ वेरी गुड वो. सो इट वाज अ नाइस Great, awesome. या मैग्निफिसेंट आउटकम हो गया विदाउट पेइंग एवरीथिंग एट होम एंड आई विल डू इट. Yeah. थैंक यू. All right. Enjoy the journey of life. There are some amazing, beautiful things. After this book is over, we are coming up with the next beautiful book. Be excited for that. And some great learnings, a great revolution. And बहुत जल्दी अब victories हमारी पूरी होती रहेंगी. क्योंकि there's a constant affirmation that I write for everyone who wakes up and, you know, like listens on the YouTube and on the Zoom, is that everyone's life has to be full of magics and miracles, and they keep sharing more and more experiences, and then we see that happening. So all of us are praying already, and I have exclusive set of affirmations that I write only for the group, only for the people in the group.
Okay, so definitely, but then keep making that little efforts of building in gratitude and adding layers and floors to the building of gratitude so that it becomes manifest very soon. Okay, so thank you so much and see you all tomorrow. Enjoy your today to the fullest and have your day full of brilliance, love, and laughter. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye Bye, bye. ma'am. Thank you. Thank Thank you you. so much, Thank ma'am. you, Thank you. and Thank you, ma'am. Thank you so much. Raman, Thank you, happy everyone. birthday from all of Happy us birthday, again. Happy Raman. birthday. Happy This birthday. is like definitely the best year of your life for sure. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, Happy birthday, Ramanji. Bye, Raman. Dipti. May you achieve Happy all birthday, your ma'am. dreams. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank